Good morning, dear friends, and I welcome you all to the journey of wealth mastery through the series of the Midas Touch Wealth Fundamentals to Wealth Mastery with Vkas Joshi. Friends, we have started this series along with or simultaneously with our other tri-weekly series, Money Mindset Mastery with Vkas Joshi, and the daily series of Golden Whispers Vkas Joshi Inspires Aspirations, with the sole purpose of financial stability and with self-development. While the money mindset mastery with Vikas Joshi deals with the self-development and change of mindset for financial stability, with the supplements from the daily series of Golden Whispers Vikas Joshi Inspires Aspirations. The Midaster series is fully focused, totally focused on the financial and legal terminologies because this knowledge is fundamental for making informed decisions, protecting assets, enhancing the financial literacy, avoiding the mistakes, facilitating effective communication, empowering growth, and building long-term financial security. By demystifying these concepts, the series aims to equip you with the tools and knowledge needed to achieve financial success and navigate the legal matters, if any, effectively. So, the purpose of starting this series simultaneously was to enhance your knowledge and implement that we have learned from our Money Mindset Mastery series, the development series. In the basic the series we started with was a change of mindset, which is the most important part or is a must part for financial stability or financial success. Now, after completing 3 or 4 months, I have already introduced, while I stated while introducing this series on 9th of April, that after completing 3 months or so with 130 odd videos, this I thought this series will will become helpful as you start investing, as you start generating money from money. But before that, we have to understand the financial concepts, the legal concepts, so that we address our necessities in a focused way. Our necessity, financial stability. Our necessity, abundance finance. Our necessity, financial goal with self-development, self-confidence, self-esteem, self-respect. And when this knowledge or the inputs which I will be giving you, this will help you, or this will be a booster to your potentials, to explore your potential, so that you invest in, or you apply your mind, or you generate the money from money with the knowledge and skills rather than on hearsay. है ना? लोगों ने बोला, इसने बोला, मैंने कर दिया, बैंक में डालो, इन्वेस्टमेंट करो, शेयर मार्केट में डालो, ये सब हमने सोचा था और हम करते भी आए, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं कि मेरा पैसा अगर इन्वेस्टमेंट डालने के बाद बढ़ नहीं रहा है, then we started blaming each other person than ourselves, है ना? हम लोगों ने सोचा अरे उसने बोला था इस शेयर मार्केट में डाल दो, मैंने वो शेयर ले लिया लेकिन वो तो बढ़ा ही नहीं, पैसा बना ही नहीं, अरे उसने गलत बता दिया. द कॉस्टली मिस्टेक because of unawareness. This I just learned about when I was looking at the many videos on YouTube, and many write-ups that do come, and social media platforms also do cry out loudly when they fail in certain things. So I thought that the series which we have started with, the financial goals, the from financial accumulation to financial stability, it should be a series of knowledge, enhancing the knowledge, take proper decision with knowledge, with awareness, rather than believing in some other person. Believe in yourself, upgrade your skills, explore your potential,
That was the purpose. And this will definitely help you, friends. As we go further, you will enjoy all the three series. The money mindset mastery, which will help you to develop your self growth, to develop your self confidence, to develop your self esteem, to develop your communication skills with confidence, with added inputs from golden whispers and the knowledge and skills of finance and legal matters from the Midas Touch series. Hence, I have repeated the first video of financial discipline twice on the 9th of April and again on 12th of April. That is on Tuesdays and last Friday. With the sole purpose that you first imbibe the basic part. Financial discipline is a must. Is a must. Without that, success cannot be achieved, friends. फाइनेंस क्या है? मतलब बोलते हैं ना कि लक्ष्मी एक जगह पे नहीं रह जाएगा, अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो लक्ष्मी भी बोलेगी ठीक है यार, मैं किसी और के पास चली जाती हूँ. मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है कि ऐसा हो जाता है कि लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी और हम बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ा रुको, मैं जरा अरे लक्ष्मी आ गई, मैं जरा तैयार होके आता हूँ. अब लक्ष्मी रुकेगी नहीं ना, दरवाजा खोलना है, उतना ही करना है. और ये दरवाजा खोलना है मतलब नॉलेज होना है, स्किल्स होना है. लक्ष्मी आएगी और रहेगी भी 100%. That is what we are up to, friends. So in the first of part, financial discipline, that will help you to understand why the financial discipline is important. Yes, friends, it is important. कई बार we are on the verge of spending everything what we take or what we get. कभी बोलते हम खुश हो गए, कभी बोलते बहुत दुखी हो गए. रिजल्ट एक ही है, खर्चा करना है. दुखी हो गए, कहीं बाहर जाके पार्टी करके आ गए दोस्त के साथ क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया था. खुश हो गए, कहीं बाहर जाके पार्टी करके आ गए दोस्त के साथ क्योंकि मैं खुश हो गया. Celebrations are important, friends. Are important. But those should be also managed. That comes under financial discipline. मैनेज माने क्या? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर आदमी फेल हो चुका है तो वो सेलिब्रेट करने क्यों जा रहे हैं? मैं अपना गम भुलाने के लिए गया था. अरे गम भुलाना नहीं है. Now you have to improve on how you failed on that. That is the part of financial discipline. If you have invested some part and you have lost it, okay, that was a wrong judgment, a costly mistake. But that doesn't mean or call for celebrations or wastage of amount on the things, redundant things. दोस्तों के साथ एक बार मतलब जहां मैंने सुना है, जैसे people go and spend their money on many of the other things which are redundant or they take away the peace of your mind. Both ways, financially also and mentally also. What is better? Better is introspect. That is where financial discipline starts, friends. As you learn from your mistakes, that will help you to improve on, and that will help you to literally and very, very correctly celebrate your success, because that will lead to success. So with the financial discipline part in place, we started with the financial discipline part, and now we proceed further with the clarity why we have to go on this path and how we should proceed further. The financial and legal terminologies, the concepts, why they are required to be understood, why it is required that we have to have the financial discipline, why it is required that first and foremost we should have a perfect planning in place. Because anything, हम अगर कहीं ट्रेन से कहीं गांव जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, so we plan our activity or we booked our tickets or our tour with some tourism or the tourist people, correct? हम किसी को टूर वाले को बोलते हैं हमारा एक टूर अरेंज कर देना, हम उसको पेमेंट कर देते हैं. What is he doing?
ही इज प्लानिंग योर टूर। 7 दिन का टूर वो बोलता है तुम इधर जाओगे, ये चीज ये देखोगे, वहां से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, प्लेन से जाओगे, ये सब वो बोलता है आपको। उसकी कॉस्ट आप उठा के उसको दे रहे हो। एंड नाउ यू आर रिलीव्ड दैट अभी मेरा तो टूर हो जाएगा। आपने अपना प्लानिंग किसी और को दे दिया। आई कैन अंडरस्टैंड फॉर द टूरिज्म पार्ट, but as far as your finance or your personal finance or your personal goals or your home or your house, your family constraints are concerned, you cannot just pass on the things to someone else. You have to learn them on your own. And hence, planning becomes the first part. हम करते आ रहे हैं, हम रोज करते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है हम रोज कैसे करते हैं ना। ऑफिस 10 बजे खुलता है, बराबर 7 बजे उठ के आप 8 के आपके लोकल रहेगी, ट्रेन रहेगी, बस रहेगी, गाड़ी रहेगी, स्कूटर रहेगी, उस आप बराबर निकलते हो टाइम पे, 10 बजे से पहले पहुंचते हो, अपना काम चालू करते हो। करेक्ट? व्हाट इज दैट? प्लानिंग। अनप्लान्ड होता तो भागदौड़ होती है, चिड़चिड़, घर में गुस्सा, लेट हो गया, है ना। सो द आउटकम्स आर सिमिलर, बट वी हैव इग्नोर्ड देम। दैट बिकम्स द फर्स्ट पार्ट फ्रेंड्स। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स टुगेदर। जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने तो 101% किया। जो मुंबई में है वो तो करते ही है, क्योंकि उनका लाइफ तो आधा लोकल के टाइम पे चाहता है। कितने बजे की लोकल पकड़नी है, फिर ऑफिस जाना है, या फिर अगर गाड़ी से जा रहे तो वो उनको ट्रैवल करने का वो सारा जो जितना लंबा रास्ता रहेगा, दे विल हैव टू कैलकुलेट द टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक्स। व्हाट आर दे डूइंग? प्लानिंग। वी हैव बीन डूइंग इट फ्रेंड्स फॉर इयर्स टुगेदर, बट जस्ट मैंने सिर्फ आपको आगाह कर दिया, आपको जगा दिया, अरे हम ये करते ही आ रहे हैं, अभी हमको पर्सनल लेवल पे करना है बस। प्लानिंग बिकॉज द फर्स्ट पार्ट फ्रेंड्स, है ना। हम सुबह उठते हैं, ऑटोमेटिकली हम ब्रश करते हैं, ऑटोमेटिकली हम चाय पीते हैं। वो एक बनी बनाई मेथड है। सुबह उठे, पहले ये ब्रश किया, फिर चाय पिया, फिर पेपर देखा, फिर ऑफिस गए। इज इट नॉट? एंड ऑन सैटरडे एंड संडे द हॉलीडेज, नाउ वी प्लान फॉर रेस्ट। नहीं, आज मैं आराम करूंगा, सुबह जल्दी नहीं उठूंगा। Again, we use the word plan. I'm planning to have a rest. I'm planning to go for a movie on Sunday. I am planning. See, we are used to the word. We are planning. लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि financial stability requires planning. Financial discipline requires planning. And hence, planning becomes the first and foremost part of any activity. अभी तो मैंने आपकी जनरल एक्टिविटी बताई जो आप बिल्कुल प्लान करके ही जाते हो, है ना। Why this planning? As I already told you, this helps you in clarity in decision making. अब जब प्लान करोगे तो समझ में आएगा ना आपको जाना कहां पे है, कैसे जाओगे, कैसे डिसीजन लोगे, क्या चाहिए तुमको, एवरीथिंग। So understanding financial and legal terms empowers you to make informed decisions about money, investments and legal matters. हर चीज के लिए प्लानिंग करना ही पड़ेगा, बिकॉज द डे लॉस्ट इज द इंटरेस्ट लॉस। एक दिन अगर आपके पैसा इन्वेस्ट करने को लिए भूल गए, प्लान किया ही नहीं, तो आपका उतना इंटरेस्ट गया, पैसे से पैसा बनना रह गया। कॉस्ट ऑफ रुपी इज टू मच फ्रेंड्स। आई हैव गिवन दिस एग्जांपल एवरी टाइम। गो टू द रेलवे काउंटर, बाय अ टिकट। Say you want to buy a ticket of 20 rupees. We are from one destination to another destination. The cost of that ticket is 20 rupees. You are having 18 rupees or 19 rupees or 15 rupees, any rupee short.
The ticket counter person will not issue you the ticket. That is the cost of money. Value of money. That is the right word. So every rupee cost. तो एक दिन भी गया, मैं कल करूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन, डिले इन द प्रोसेस इज डिले इन योर फॉर्च्यून. कल क्यों करना है? इन्वेस्टमेंट तुम्हारा आज पैसा कहाँ रखोगे? नहीं, मैंने घर पे ड्रॉवर में रख दिया है, कल उसको बैंक में जाके डाल दूंगा. आज क्यों नहीं डाला? आज का दिन क्यों गवाया तुमने? नहीं, आज मैं थक गया था, मैं बाहर गया था. ओ, तो तुम्हारे फॉर्च्यून के लिए भी तुम थके हो. थके इसके लिए हो कि बिकॉज यू आर नॉट प्लान द थिंग, यू डिडंट रियलाइज द वैल्यू. यू थॉट मैं कल करूंगा तो उतना है. नो फ्रेंड्स, वन डे लॉस्ट इज वन डेज इंटरेस्ट ऑन योर अमाउंट. पैसे से पैसा बनना ही है. भले ही आप उसमें से 2 रुपए कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कमाओ. ड्रॉर में रख के क्या करोगे? कुछ फायदा तो है नहीं, पैसा तो बढ़ेगा नहीं. सो दैट इज व्हाट वी से बजटिंग, है ना? वही तो हम सोच रहे हैं. जब हम बजट बनाएंगे तो हमारे समझ में आएगा कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे लायबिलिटीज कितने हैं, एंड हमको प्रोटेक्ट करना है. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एसेट्स आल्सो. रिकरिंग एक्सपेंसेस आते हैं एसेट्स में भी, so we have to protect them. So knowledge of legal terminology helps to protect your assets and interests. It ensures clarity in contracts, agreements and estate planning, reducing the risk of misunderstanding and disputes. Correct? क्योंकि अगर डिस्प्यूट होगा तो आपको पता तो होना चाहिए आपके एसेट्स क्या है, डिस्प्यूट किस पे है, आपका क्या है. सही है? So that knowledge has to be there. Now, as I already said, if you are ignoring all these things, what are you doing? You are making costly mistakes. अगर पैसे से पैसा नहीं बन रहा है तो ये मिस्टेक है ना. अरे लेकिन बड़ी है, because you are not yet understood the value of money. So planning, budgeting are important part, because these costly mistakes unawarely are taking away your major of the fortune. तुम्हारे कल का फॉर्च्यून जो तुम तैयार करने के लिए बैठे हो, तो इतनी मिस्टेक्स कर दिए तो ये सारा आपका फॉर्च्यून ही लेके जा रहा है. Now, if at all you require to communicate with the professionals. चलो, मैंने अभी आपको कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आप बोलोगे ठीक है विकास जी, हमको तो पता नहीं है. So we have to approach some investment banker or some investment advisors, but we are not aware. So this knowledge that we are taking through the series will help you for the right communication with the professionals. आपको क्या पूछना है, कैसे पूछना है, किसको अप्रोच करना है, और उससे गोल एक ही है हमारा, उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी है, पैसे से पैसा बनना ही है. वी आर नॉट एट ऑल प्लानिंग टू डिटोरिएट आवर अमाउंट. नहीं नहीं नहीं, हम लॉस मेकिंग के लिए नहीं जा रहे. लॉस होगा तो हम क्या करना है वो भी सोचेंगे, लेकिन हम इस मन में ये धारणा बना के नहीं जा रहे हैं क्या इसको मैं बोलूंगा तो थोड़ा लॉस होगा तो चलेगा. वी ऑलवेज से इन्वेस्ट माय मनी वेयर आई कैन गेट मोर इंटरेस्ट. मुझे पैसे से पैसा बनाना चाहिए. तो ये कम्युनिकेशन विद द प्रोफेशनल्स, विद द टर्मिनोलॉजीज, विद द लीगल टर्म्स, विद द फाइनेंशियल टर्म्स will be easy for you to communicate. Now with this all done, अभी बहुत बिजी हो आप, अपने का बिजनेस खुद का है जो ग्रो कर रहा है, या आपको कोई से प्रोफेशन में हो वो ग्रो कर रहा है, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक और अपना होम क्लॉक, मतलब जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल क्लॉक ऑल्सो एंड होम क्लॉक ऑल्सो, द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑल्सो, इट इज गोइंग साइमल्टेनियसली. एक तरफ ये भी करना है, एक तरफ ये भी करना है. तो ये नॉलेज, ये स्किल्स आप जितनी जल्दी आत्मसात करेंगे, the more you imbibe early,
The more you learn it early, the more you allow it to settle in your mind or in your brain, understand the terms, you will be able to proceed further at a faster rate in your business also and in your home front also. You will be in commanding position as you are fully aware. आपको उसको रोज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो तो बेसिक में चला जाता है. अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है. We cannot wait as we don't have the right time also. Now in the process, जब हम बढ़ते ही जा रहे हैं, हम प्रोफेशन में भी आगे जा रहे हैं, हम होम की तरफ भी आगे जा रहे हैं, हमारे पास अब अलग सा टाइम नहीं है, तो हम किसी इन्वेस्टर को, किसी बैंकर को, किसी दोस्त को हम बोलते जब है, तब नाउ वी आर वेरी क्लियर इन आवर आइडियाज, वी आर वेरी क्लियर इन आवर टर्म्स, वी आर वेरी क्लियर इन आवर फाइनेंशियल एंड लीगल टर्म्स ऑल्सो. मतलब अगर कोई प्रोफेशनल बोलेगा ये अभी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, नाउ यू आर अवेयर what you have to look at in the agreement, and hence this will help you for a long term financial planning. अभी तक तो हम ये सोच रहे थे बैंक में पैसा डाला, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है, ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, मंथली इंटरेस्ट ले रहे, जो भी है. But now we are more interested in getting more money, so we started investing in other opportunities we get also. That is the share market होगा, debt market होगा, gold, silver, है ना, हम इन्वेस्ट करते चले गए. सेक्टर एडवांसेस, सेक्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये पैसे कैसे हमने डालने हैं, दैट इज ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड. बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड द लीगल एंड फाइनेंशियल टर्म्स, नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रोसीड फर्दर, you have got the skills and required knowledge to talk with the professionals what you want, how they will tell you the various methods. Now you have to choose. Again, you will have the potential, you are having the potential and you are having the skills and knowledge to take a decision or a aware decision, a knowledgeable decision. बेसिकली हमको नॉलेज है, अभी सिर्फ मुझे डिसीजन लेना, तो मैं कम्युनिकेट को, नाउ आई एम इन द पोजीशन टू कम्युनिकेट विद द प्रोफेशनल्स आल्सो, मुझे क्या चाहिए और कैसे चाहिए. एंड नाउ आई एम हैप्पी दैट आई कैन प्लान फॉर माय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. नाउ दिस इन टर्न, ये एक तरह से आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है. अगर आपको पता चल चुका है, व्हेन यू आर अवेयर that when you can have the skills and knowledge on the matter and you can be able to talk with the professionals to demand what you want so that money can be generated from money. Your money will never be sitting idle. उसको बैठने देना भी नहीं है. 1 रुपया भी मिलेगा तो भी चलेगा, 1 रुपया चाहिए. That should be the attitude. It's your hard-earned money. No one has got any right to talk on how you earn it. That is none of the investors or investing parties' business. Unless and until the legalities come. Now you are also aware of the legal terms. So when we are talking, when I will be talking on this Midas test series, it will be all on the legal part only. बाकी लोग कैसे करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा. So that is not a proper way also. That is, I will not be talking on क्या नहीं करना है. मैं इसमें बोलूंगा मुझे क्या करना है, that will be legal. क्या नहीं करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. क्या करना है उस पर आप अमल करो, तो क्या नहीं करना है अपने आप बाजू हो जाता है. So friends, if you are taking wrong decisions, क्या हो जाता है. अभी हाल ही में पिछले 2 हफ्ते में एक किसी इन्वेस्टर का लोगों ने बहुत सारा पैसा उसमें डाला. The video was viral on YouTube also. It appeared in newspapers also. That person, I cannot take the name,
took much of the investments from many of these known people. है ना, ऐसा होता है, अरे तुम मेरा दोस्त है, मैं तुमको डबल बना के देता हूँ, तुम्हें हर महीना इतना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा. He guaranteed some interest amount to everyone. Nobody even gave a thought. When the market is not even giving that much of amount, how this person is able to give? But they started investing. है ना, लालच बली बुरी बला है, पैसा डाल दिया. अब एक दिन ये आदमी इंटरेस्ट नहीं दिया, भाग गया. Then the police complained, and somewhere I also read that the police have now nabbed him, and he is in the police custody. Police are doing their job, but were you doing your job? No, you didn't apply your mind because you didn't have the required knowledge or skills. लालच की वजह से उसको पैसा दे दिया, उसने वो पैसा लेके भाग गया. That is a true story. ये अभी दो हफ्ते पहले वाली बात है. ये पेपर में आई है, यूट्यूब में चल रही है. How can anyone give hard-earned money to someone just because who is luring you of higher interests? How you have to understand, how can he pay back? कहां से पे बैक करेगा वो, जो मार्केट ही इतना बड़ा नहीं है, तो पे बैक कैसे करेगा? वो आमतौर पे से वो ना, इसकी टोपी उसके सर, वो वाला चक्कर उसने घुमा दिया होगा. Some very notable people also invested in. I was shocked to hear the names also from the film industry. So friends, I thought that this would be the right series to help you, along with the self-confidence development series of Money Mindset Mastery with Vkas Joshi and the daily inputs from Golden Whispers. Now, as we discuss further the financial and legal terms and understand the investment and wealth foundations, wealth fundamentals, so as we reach our wealth mastery, that is our goals. That is our goal. Wealth mastery, financial stability, that is our goal. But we have to be financially disciplined. Was our first lesson. Today it was the planning part. We have to be perfectly planned. We cannot afford costly mistakes. ये अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, that is a costly mistake. लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस आदमी के हाथ में दे दी, क्योंकि जस्ट वो 2-4% इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा था, और कुछ महीने उसने दिया भी इस भरोसे. There was no agreement in place, nothing doing. I think whatever I learned was that he made an agreement on rupees 100 paper or some 500 paper, stamp paper. There is a rule how to proceed into that. Why we should not be lured, or why we should not invest in such people. जो आपको बता रहे हैं कि मैं कर दूंगा, आपको पहले पूछना ही चाहिए खुद को, ये करेगा कैसे. लॉजिकल एंड होना चाहिए हर चीज का. And if not, then that is what we call costly mistake. अब जिन्होंने अपनी जिंदगी पूंजी लगा दी, वो तो डूब गए. अभी उनका पैसा वापस मिलेगा, पुलिस विल मे हेल्प देम आउट, कैसे चलेगा नहीं, आई एम नॉट अवेयर. But is it not that at present, as per the newspaper records, or as per the YouTube records, or as per what social media says, the amount has gone. अभी तक जो लोगों ने इंटरव्यू दिया यूट्यूब पे, उनका कहना है उनको उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिला है, और प्रिंसिपल का तो पता नहीं है. क्या होगा? फेल्ड. पूरी फिर से जिंदगी फिर से खड़ी करनी पड़ेगी ना. लेकिन साथ में आपकी फैमिली फेल, आपका पूरा टोटल कैलकुलेशन फेल. वेरी कॉस्टली डिसीजन, वेरी कॉस्टली मिस्टेक. So friends, financial discipline and planning was the second part, is the most important part to start on and to work on. I sign off on this note, friends, and we meet again
in another episode. That is on Friday at 10:30 a.m. The Midas Touch, 10 a.m. at the Midas Touch, Wealth Foundation to Wealth Mastery series with Vkas Joshi. Join me in the journey, friends. We will enjoy and we will be financially stable. Till then, bye bye. Enjoy the day. Enjoy the life, friends. It is a one time activity. Do enjoy.